Hello, viewers, and welcome to Educational Journey. Again, we are doing a live session for the University of Science and Technology, or UST, Korea Scholarship Program for the Masters and PhD degrees. University of Science and Technology is a government-funded university with 32 campuses, and it offers the highly paid scholarship in South Korea. For the PhD, you will get around about 1,350 USD, USD dollars per month for the food and living. And for the masters, you will get around about 1,000 US dollars per month for the food and the living. With this, you will get the tuition fees and some other benefits like health insurance and airfare and some research support funds as well. And you can also avail like the funding for the conferences if you want to attend any conference in any other country or within South Korea. तो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूएसटी साउथ कोरिया का जो स्कॉलरशिप है वो एमएस और पीएचडी के लिए है, ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है ये। और इसके अभी फॉल 2021 के लिए जो एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। कल से कुछ इंस्ट्रक्शंस न्यू अपलोड होंगी जिनको देख के हम फिर एक लाइव सेशन कर लेंगे या एक वीडियो अपलोड कर लेंगे ताकि आपको कोई अगर चेंजेस हैं तो बता दीजिए। अदरवाइज ये सेम ही होंगी जो हमने पहले कवर की हैं। और इसके अंदर आपको पीएचडी में $1,350 $1,350 पर मंथ फूड और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए मिलते हैं, और आपको मास्टर्स में $1,000 मिलते हैं for the food and living expenses. And then with this आपको मिलते हैं जी airfare like ticket at the start and at the end, and national health insurance in South Korea, and conference के लिए भी आपको सपोर्ट मिलती है अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, या आपका प्रोफेसर अगर आपको कहीं बाहर रिसर्च के लिए भेजना चाहते हैं। लाइक कोलैबोरेशंस होती हैं यहाँ पे प्रोफेसर्स की डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स के साथ दूसरे कंट्रीज में, so they can send you and they can recommend you for that offer as well. So you will get some extra funding for that, uh, like for the research program outside South Korea. If you have any question from the previous 2 or 3 videos, you can write your question in the comment box, and then I will start how you can fill the application forms for the UST South Korea, and I will explain you how to do this and how you can fill the, or how you can get the recommendation letter from your recommenders or your previous professors in your country. तो कैसे आपने रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, and how to fill the recommendation letter form and how your recommender can write recommendation letter for you, because there is a separate pattern or specific template given, so you need to follow that template or the format. तो इसमें आपको ही इसी फॉर्मेट के अंदर ही एक्सप्लेन करना होगा डिफरेंट चीज़ों को। Now we are taking questions. First of all, Ammar Gaire, welcome to this video and thank you for joining us. Sir, can you fill my form, sir? How can I do this? Like how I can fill your form? You need to write your form and fill your form, but I can give you the instructions or I can guide you. Let me know what is the problem in this form. Like if you are talking about Global Korea Scholarship Program or University of Science and Technology form, because I do not know which form. It can be for the passport, it for form mean any form. So let me know what is the form. Hello sir, good evening. Have a query like can we insert an image file on our word processor, or do we need to stick pick image? Yes, you can do any. Like if you want to just paste the soft form of your image in the form, you can also do that, but it is always easy that if you have any passport size picture available in your hand, then you can just paste it on the form when you want to send these global Korea scholarship forms for embassy or university.
So it's better if you just paste it, but make sure it is on the form at the right place, so you can attach it with some gum or glue. So just paste it on your form in GGS form. Yeah, I think it's the same. Okay, sir. Thank you. And we will start uh, how you can fill the application form for the UST South Korea. Why I am giving so much time to this scholarship, University of Science and Technology or UST South Korea scholarship, because it is the highly funded scholarship and only like the very highly funded, more than 1300 US dollar for the PhD program. Otherwise, generally the PhD gets around about 800 to 900 US dollar, and for the master you get almost 600 to 800 US dollars per month for the living and others. And you even do not get the airfares and some other things in general scholarship programs. So here, this is a highly paid scholarship. So we want students to apply to this scholarship and get more and more monthly like stipend, and so that you can save some amount for your family and for your future as well. With study, you can earn good amount of money. So these are the application forms. You can download these forms in Word format. And this is the PDF form because I'm just going to discuss it. I'm not going to fill it here. So you need to download these forms in Word format from the UST admission.ust.ac.kr/english.do. So document. So these forms are available on UST admission website. So you can download these forms and you can fill in the MS Word. So always remember, whenever you are applying for any scholarship, you should write in MS Office or Word, MS Word, because you cannot submit these forms which are handwritten. Master's degree thesis. This is the form number one. If you are an applicant for the PhD program, then you need to submit the some proof for your master's thesis. So exactly, you are not going to submit your thesis, but you are giving them the information about your thesis. And how you can do this? They provide you a specific form, and that form you need to fill out, and then you can submit it to the admission office, or you can like upload this form. Just a minute, I am giving answer to some question. Okay, so if you are a PhD applicant, then you need to submit this form, and it is a master. So need complete the form number one, this one, and attach only title and abstract form to 1 2. So insert scan, do not attach full thesis. This is written, who is preparing a master's thesis, complete the form 1 only. So if you are writing your thesis and expected to graduate in the uh, August or July, then you need to submit just this form, because you do not have the actual real thesis in your hand, so you can just fill this form. But if you have already completed your degree, then you should submit these two forms, which is 1 and 2. So those who have obtained a master's degree without a thesis, complete the form 1 2. Okay, prove that you have obtained a master degree without a thesis. So here is the form number 1 master's degree thesis. You need to write title and abstract. So it is you can write maximum 5 lines. So if your abstract is mostly for the
abstract for the thesis is usually one page or more than one page. So you need to copy first 5 lines here, and then your university name, your advisor, whatever is his title, professor, doctor, or doctor ABC, whatever his name. And then you need to do master's degree without a thesis. If you have done any or your degree without thesis, what you need to do is you need to fill this form. So you need to understand, if your master's degree is with thesis, then you are going to fill this one first, and you are not going to fill this one with thesis. Then you cannot fill this. If your degree, master's degree is without thesis, अगर आपकी मास्टर की जो डिग्री है विदाउट थीसिस है, तो ये आपको फिल करना है. अब आपने करना है प्रूफ दैट यू हैव obtained a master's degree without a thesis. Certificate, if you have any certificate from your college or university that your master's degree is without thesis, or it is written on any degree or transcript or somewhere, then you can submit that one here, paste it. Course introduction, website capture. If something is mentioned on the university website about your degree, that this degree title is without thesis, so you can capture from the website, or take a photo of that web page and paste it here and submit. And those who have thesis in their master's degree, they need to scan their first page, thesis title and abstract, where your like scan of thesis title and abstract with author and university. Mostly the outer page or the cover page of the thesis is like title and your name and your university name. Though, so you are going to scan your cover of your thesis and paste it here, and then you can scan your abstract and directly paste it here, or you can add one more page to this form too, if your degree, master degree, is with thesis. This is not for the most of the students from Pakistan, India, or Bangladesh, or Sri Lanka, and any other country, but this is for the students from English speaking countries. So it is not required for you, because it is English proficiency certificate, and for the international admissions from those countries who do not have English as a national language, they are required to submit IELTS or TOEFL score. IELTS minimum 6 band, or overall 6 band is required. Letter of recommendation. So this is the most important part of your application. आपके application का सबसे important जो part है वो letter of recommendation है, जो आपके chances maximize कर सकता है, increase कर सकता है. So it should be very well written, and you need to fill it correctly. So you should write your name here, your intended program. If you are applying for the PhD, take this one and delete this one, or you can directly bold it and tick here or check here. Your campus, intended or desired campus, like KST is your campus or something, or school. And then major, whatever is the major, because I told you about different majors. If you do not know how to find these majors, then I can tell you how to find these majors again here. So I will take your questions. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, Rifat Batul. Yes, this is a fully funded scholarship program. I'm mostly covering fully funded scholarship programs here on my YouTube channel or my live sessions. So because you will get your tuition fees, you will get, if you are applying for the PhD program, you will get $1,350 every month for your living. You can also get the airfare or the air ticket at the start of your degree and at the end of your degree. Then you will get also some other supports for your health insurance and some other benefits for your research purpose. So this is a fully funded, and this is actually highly funded, or one of the mostly highly funded scholarship in South Korea, University of Science and Technology. Usually the PhD students get 800 to 1,000 US dollar here in South Korea, and this scholarship provides you 1,350 US dollar every month. And for the masters, even you get 1,000 US dollar per month here in this scholarship program. And general stipend, or the trend for the master's student stipend or salary, is
600 to 800 US dollar. So do not worry about the funding or something, because it is a government funded scholarship program and government funded university. So if you have IELTS score 6 band overall, then you should apply or give it a try. आपने क्या करना है अब? Please seal this letter in an envelope and sign your name across the seal. Return the envelope to the applicant or send it directly to UST before the deadline. So your recommendation letter should reach to the university office before the deadline. If your deadline is uh, for example 18th of March or 8th of April, sorry, then your envelope should reach on before or on the 8th of April. But अगर ये लेट हो जाता है तो फिर ये कंसिडर नहीं करेंगे. This recommendation letter will remain confidential during the admission process and may also be used by UST in its procedures relative to admission and fellowships. Then your recommender will write his name, then his affiliation, like his University of Science and Technology or National University of Science and Technology, NUST, Pakistan, his department. If like he is from energy engineering, then he can write Department of Energy Engineering. Website is if his website is available, or he can write here his university or departmental website. Position or title, like his assistant professor or associate professor or doctor, and his email ID. If he can write his official email ID, like if he is from University UET, University of Engineering and Technology, then he should write his official email address from his university. Uh, and his postal address, he will write his address here, telephone number, and mostly fax is not available, so he can leave it or he can skip it. Then he will check these small questions and answers these questions. उसने क्या करना है कि इनको आपके स्किल्स और एबिलिटीज के लिहाज से चेक करेगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो अच्छे तरीके से मतलब आपको सपोर्टिव तरीके से ये फिल करे. तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा अगर आप मेरे लिए बहुत अच्छा लिखते हैं तो इस फॉर्म के अंदर. सो ही इज आस्क्ड टू check one of these given tabs for motivation for graduate work. like आपकी एजुकेशन में या ग्रेजुएट वर्क में कितना एक मोटिवेशन है उसके लिए और कितने आप इंटरेस्टेड है हायर एजुकेशन के लिए. नो बेसिस फॉर जजमेंट, excellent, above average, average, below average. So he can select any of these. And then intellectual ability for graduate work. So your ability, he can recommend that it's excellent or something. If he writes average and below average, it will be very bad, but should be at least excellent. Breadth of knowledge or general knowledge, he can write something. Then understanding of major field, he can check any field according to your abilities. Ability to analyze ideas, again he will check one of these options. And ethical standard and integrity, so at least excellent is good. Oral English expression skills, again he will check these. Written English expression skills should be excellent. Promise in research or scholarship creativity or creative should be this one, excellent. एंड देन देयर आर सम क्वेश्चंस. उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जो उन्होंने इस फॉर्म के अंदर पूछे हैं. उन क्वेश्चंस के आंसर करना लाजमी है. आपका जो रिकमेंडर होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर लिखेगा. प्लीज प्रोवाइड योर असेसमेंट ऑफ द एप्लीकेंट. हाउ लॉन्ग हैव यू नोन द एप्लीकेंट इन and in what context. So they are asking about how long he know you and in what context, like he is your thesis supervisor or he is your class in charge or he is head of department, or how he knows you. So he can write here 3 to 4 lines that he can mention your abilities as well related to his work with you or your work with him or your relation with him. What are the applicant's strengths and weaknesses? So definitely he will write some strengths. Then he should write weaknesses which are positive one, actually, like you are very sticky to your work. You do not want to leave your work or your part to any other student.
एंड यू आर वेरी डेडिकेटेड, एंड आपने मतलब इस तरह से शो करना है कि जो आपकी वीकनेस भी है वो भी इन द पॉजिटिव सेंस हो, ठीक है। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, वेट अ मिनट, आई एम गोइंग टू आंसर your questions. Uh, so please comment on the personal characteristics of the applicant so he can better answer these questions. Your personal characteristics, yeah, how is your behavior towards the professors, how you work in a one team, or you want to work alone, or you are a team member, better team member, you are sportive or something, or you do not sport, or you do not want to work with others, and these type of things he can mention here. And then please evaluate the applicant's potential and qualification to carry on advanced study in the field specified. Then he will write your abilities in your field related to your studies, your experimental software, and communication skills or writing skills, and how uh, you can do better, or can you do hard work to complete the degrees like PhD, and how mentally tough you are, एंड अगर वो चाहे तो लाइक इस तरह की चीज़ें जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं, आपकी एबिलिटीज़, आपकी क्वालिफिकेशन, आपने जो वहाँ पे कोर्सेज पढ़े हैं, जो आपने रिसर्च वर्क किया है, उसको वहाँ इसके अंदर उसने लिखना है, और इस तरीके से लिखना है कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े। तो उस पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए उस जो भी आपका रिकमेंडर है, एक तो उसकी अपनी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा वो आपको अच्छी तरह जानता हो। अगर वो आपको जानते नहीं हैं तो देन यू कैन आस्क हिम और हर दैट प्लीज राइट अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और फॉर दिस क्वेश्चन. Briefly describe your overall opinion on the applicant. This will be like short 3 to 4 line answer to this question, and this part can go outside the one page. He can move this page to the next page as well, because this is a PDF file. I'm just explaining. You can download this form, these 2 pages in the Word format, and provide to your recommender, so he can even stretch it to two to at least, like it will be this form, and he can stretch it to 2 page, or if needed he can stretch it to 3 pages. And admission to UST is highly recommended, then he should check one of these options. So highly recommended is the only option I think he should check. Then signature of recommender, he will sign here, he will write date here, he can also put a stamp on here or somewhere in this line. And then he will close this form and this form in an envelope and seal it. Sign your name across the seal or the back flap of the envelope. So make sure it is signed on the back side of the envelope and sealed after signature, or seal it and then put a stamp. So the next form is proposal for study. Before going to this proposal for study, I'm going to answer your questions. सर जी, इसमें हमें एमफिल का कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो मास्टर्स जो होता है वो एमफिल होता है रिफत बतूल। इंटरनेशनली एमफिल कोई डिग्री नहीं है। इस टाइम जितने भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगी, अगर आप मुझे सुन सकती हैं, आई होप आप सुन रही हैं, तो आपकी जो डिग्रीज होती हैं यहाँ पे बैचलर्स 4 ईयर, देन मास्टर्स 2 ईयर, देन पीएचडी। तो मास्टर्स जो डिग्री इंटरनेशनली आप अप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू एमफिल इन पाकिस्तान. MPhil is introduced in Pakistan, or like countries in like Pakistan, because sometime 2 साल 2 year BSc, then 2 year MSc, and then 2 year MPhil. So क्या होता है कि उसको हम MPhil कह देते हैं, क्योंकि आपने MSc कर ली है, तो अब दोबारा से आप उसको मास्टर्स नहीं शो कर सकते, तो वहां पे MPhil लिख दिया जाता है. तो दैट इज एक्चुअली मास्टर्स इन साउथ कोरिया. तो अगर आपने 2 साल बीएससी की है, 2 साल एमएससी की है, तो आप अब मास्टर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो आपको समझ आ गई. प्लीज टेल मी, यस आस्क मी, बट आस्क मी इन अ प्रॉपर वे. What you write is I cannot understand. Please tell me the
professor letter and researching are the compulsory in the master. What is this? Like, I cannot understand your question. Please write it in a proper way that I can understand your question. What you want to ask? Please tell me the professor later and researching are they compulsory in the masters? Yes, Rifat Batul, you are welcome. And I'm going to explain the proposal for study now. So, proposal for study is like you are if you are applying for the Global Korea Scholarship Program, then you know how you write these proposal for study or study plans. Then this is another example of the application form how universities ask you to write. तो यहाँ पे भी आपको कुछ लिमिट्स दी गई हैं. You have some limits to write these answers to these questions, and they are very straightforward and related. Proposal for study, then you will write name here, campus or intended campus, and intended department or major where you want to apply. So the limit for this is for every question you can write, you are not going to write it in Korean, so skip it. Maximum 1600 English characters per question, including spaces. So what is characters? If you write English, then there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 characters in one word, and one space is here. So 8 and this space 9. These are like 9 characters from these to this next word. So these are characters. You can like calculate your characters or in your document by just selecting the text, and you can see how many characters are there in that selected text. So you are going to answer, please describe your life philosophy focused on your formative years. So you can write your life philosophy, like what you think about life, what is your aim for the future, what are your goals, and focused on your formative years. So आपने अपने जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उनके बारे में आपकी जो लाइफ फिलॉसफी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, लेकिन इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा भी गूगल करेंगे तो इसके बारे में आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत आइडियाज मिल जाएंगे. तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली स्टूडेंट्स लाइक खुद से लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसको लिखने के लिए आपको कुछ रीड आउट करना पड़ेगा. आपको यहाँ से क्या करना है, ये क्वेश्चन लाइक लाइफ फिलॉसफी एंड फॉर्मेटिव ईयर्स, ये 2 कीवर्ड्स आप लिखें वहाँ पे, focus on your formative years. Then you should Google it and you will get some ideas. Then you can like rephrase those ideas, or you can simply write in your words. But without reading anything about your life philosophy and your formative years or anyone's experience, you cannot mostly write answers to this question. So it is always better that you write this in Google and at least study 1 to 2 articles related to life philosophy, and at least life philosophy you should read. Then please describe in detail your motivations for seeking further learning at this institution. So in Global Korea Scholarships, you already know how you can write the motivation for South Korea, or what is your motivation for South Korea, and what is your motivation to apply for this scholarship, University of Science and Technology, and what is your motivation for the particular department. Yeah, and then you can, like, when you come to the department, then you can write like your background is in the same field, you know the basics, and you know the you have some research experience in the particular field, and then you can ask for the, like, if you are provided with the opportunity, then you can um, avail this, and you can enhance your skills and you can achieve your future goals. तो आपको यहाँ पे मोटिवेशन लिखनी है, जिसके अंदर आपने पहले कोरिया के बारे में लिखना है, फिर आपने यूएसटी कोरिया के बारे में लिखना है. लाइक आप कहेंगे कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, मैंने वेबसाइट चेक की है जिस पे मुझे रिसर्च के लिए इक्विपमेंट चाहिए वो अवेलेबल है.
यहाँ पे मतलब रिसर्च जो हो रही है इस ग्रुप में या इस इंस्टीट्यूट में वो मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करती है, और इसको कंटिन्यू करते हुए मैं अपने फ्यूचर के जो गोल्स हैं या जो भी एम्स हैं वो अचीव कर सकती हूँ। और फिर आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में लिख सकती हैं कि जो आपका डिपार्टमेंट जिसमें आप अप्लाई करना चाहती हैं वो एग्जैक्टली मैच करता है आपके बैकग्राउंड से, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है उसमें, या एटलीस्ट आप लिख सकती हैं कि आप इसके बारे में कम्प्लीटली जानती हैं और कोर्स वर्क वगैरह आपने पढ़े हुए हैं। Among the traits and capabilities required by our institution: creativity, challenge, convergence, credibility. Please tell us which one describes you best, elaborated with examples. So again, you are going to write one of these abilities or capabilities. Then you can mention one of your life events or an event from your life experiences, and you can elaborate with some examples. So for this, I would recommend you to better read something. Why I या क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा यह इसके बारे में रीड करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप रीड नहीं करेंगे तो जर्नली आपको लिखना बहुत इसके अंदर डिफिकल्ट लगता है कि कैसे लिखा जाए। आप इवन यू हैव सम लाइफ एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू दिस लाइक क्रिएटिविटी और चैलेंज, बट यू कैन नॉट राइट समटाइम। तो आपको करना यही है कि एक आध बहुत से आर्टिकल आपने गूगल से देखना है और उसको कॉपी नहीं करना एग्जैक्टली, बट यू कैन यूज दैट सेम आइडिया और यू कैन राइट इट इन अ बेटर वे, और यू कैन राइट इट योर साइड ऑफ द स्टोरी। तो उसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अमंग द कोर्सेज यू हैव कंप्लीटेड at the undergraduate master level, which was one that interested you the most, and what are your accomplishment in the field? देन हेयर आपने लिखना है कि आपके जो फील्ड जो आप अप्लाई करना चाह रही हैं, फॉर एग्जांपल बायो नैनो टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई करना चाह रही हैं और बायो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर कोई एक मेजर रिसर्च डायरेक्शन है या ग्रुप या प्रोफेसर की रिसर्च इंटरेस्ट है, उसके बारे में जो आपने कोर्स पढ़ा हुआ है वो लिखें। उससे रिलेटेड अगर आपके कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है वो लिखें, आपको कोई सॉफ्टवेयर आता है वो लिखें, और आपने कोई लाइक ऑनलाइन कोर्स पढ़ा हुआ है वो लिखें, आपने कोई थीसिस किया हो उससे रिलेटेड उसको लिखें यहाँ पे। और इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में विद इन द लिमिट 1600 इंग्लिश कैरेक्टर्स आप लिख सकती हैं। तो ये जितने भी पेजेस हो जाए नो प्रॉब्लम, बट 1600 लाइक कैरेक्टर्स होने चाहिए। प्लीज डिस्क्राइब योर रिसर्च प्लान एट आवर इंस्टीट्यूशन इन डिटेल्स। वहाँ पे जो आपने स्टडी प्लान लिखा था ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपने वो वाला लिखना है। हाउ यू विल परफॉर्म योर रिसर्च हियर, like you can write that in the first 3 months you will do a literature review, and after literature review you will start an experimental like experiments, and then analysis, and then you can write that at the end of the first year you will start writing the manuscripts or research papers and submit after 3 months or something। तो आपने पहले साल की इस तरह से मतलब स्टार्ट करना है। देन आफ्टर submitting first paper, then you can do it in 3 months or 6 months or 4 months for like one paper, and that at the end of like in the fourth year you will write that you are going to write your thesis, and you are going to concentrate on your future goals and future aims, and you will do your research accordingly. Please describe your desired career path upon graduation in detail. Here you can mention if you want to go to the industrial jobs, or you want to be a professor, or you will uh, immediately look for the postdoctoral position, and after getting 3 to 4 years of postdoctoral experience you will move on to the professorship or teaching job, and then uh, being in the teaching field or being as a professor you can continue your research, and what you want to bring to the society। तो आप सोसाइटी के लिए क्या वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, लाइक इफ यू आर फ्रॉम द green energy or renewable energy field, then you can write that you can help the researchers, or you can provide some good or you can make some good materials or something
जो कि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हो रहा है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि आप ऐसा कोई काम करेंगे आफ्टर व्हेन यू आर अ प्रोफेसर और यू आर इंडिपेंडेंट रिसर्चर दैट कैन ब्रिंग सम पॉजिटिव साइड टू दी these थिंग्स। तो आप इस किसी भी तरह से आप अपने फील्ड से रिलेटेड जो देख सकते हैं कि उस फील्ड के अंदर आप कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी हो, कॉमन यूज़ के लिए कोई प्रोडक्ट हो, या लाइक जैसे होता है कि अभी फॉर एग्जांपल आप किसी मटेरियल्स पे काम करना चाहते हैं, तो मटेरियल्स की क्या एप्लीकेशन ऐसी आप कोई रिलेट कर सकते हैं। तो उस तरह का यहाँ पे आपने फिर एंड पे देना है कि मैंने वो सोचा हुआ है ज़हन में कि मैं फ्यूचर में जब इस तरह इंडिपेंडेंट रिसर्चर बन जाऊँगा या बन जाऊँगी, तो देन आई विल डू दिस थिंग्स और आई शुड डू दिस थिंग। तो यहाँ पे आपने करियर पाथ देना है। आप इंडस्ट्रियल जॉब करना पसंद करेंगे या पोस्ट डॉक्टोरल की जाना पसंद करेंगे इन यूनिवर्सिटी इन कोरिया और आउटसाइड कोरिया, देन यू कैन राइट दैट आप प्रोफेसर फील्ड या टीचिंग फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, और फर्दर आप अपनी एम या गोल के मुताबिक इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चन से तो कुछ जिनको आपने यहाँ पे फिल आउट करना है, और ये इसकी कोई लिमिट नहीं है पेजेस की। ओनली लिमिट इज 1600 इंग्लिश कैरेक्टर्स पर क्वेश्चन, मीन के वन पैराग्राफ फॉर ईच these things is okay for you, and it will be like 2 pages or 2.5 pages for to complete this form, which is proposal for study. So form number 4 is mandatory. Form number 3 is your letter of recommendation. It is also mandatory. And form number 1, if you have or have you don't have a master's thesis, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये आपको फिल लाजमी करना है। अगर आपने थीसिस नहीं किया हुआ तो ये पेज है आपके लिए, अगर थीसिस किया हुआ है तो ये पेज, और प्लस आपको ये पेज भेजना है। अगर थीसिस नहीं है तो ये वाला पेज और ये वाला पेज फिर आपके लिए नहीं होगा, जस्ट फॉर्म नंबर 1 एंड दिस वन, तो ये आपके लिए होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप के लिए या UST स्कॉलरशिप के लिए, देन यू कैन आस्क मी नाउ। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। आपका सवाल जो भी होगा, जो भी आपका क्वेश्चन है, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर जस्ट योर क्वेश्चन एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। अगर तो आप देख रहे हैं कोई भी स्टूडेंट, तो आपको क्वेश्चन है तो लिख दीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अदरवाइज हम साइन ऑफ कर लेंगे। UST का जो स्कॉलरशिप है ये लाइक आपको परेशान नहीं होने देता, आपकी फंडिंग हमेशा आती रहती है पर मंथ। अगर आप PhD में है तो $1350, $1350 पर मंथ, एंड इफ यू आर इन मास्टर्स देन $1000 फॉर दी 1 month. And in this amount, even for if you are a master's student, you can live with the family here. If you have one kid and wife or husband, then you can live here with your family. 3 से 4 मेंबर्स की जो फैमिली है यहाँ पे वो इजीली इस अमाउंट में रह सकती है इन साउथ कोरिया। अगर आपने यहाँ आप सिंगल रहते हैं यहाँ पे तो ऑलमोस्ट आप $500 to $600 पर मंथ सेव कर सकते हैं इन मास्टर्स, बिकॉज खर्चा बहुत कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तो आप डॉर्मेट्री में रहते हैं, डॉर्मेट्री जो है सब्सिडाइज्ड होती है, उसके अंदर आपके चार्जेस बहुत कम होते हैं। तो आप मास्टर्स में $500 से $600 पर मंथ सेव कर सकते हैं, घर भेज सकते हैं पाकिस्तान और अपनी कंट्री में। And as a PhD student you can save even more, like 800 or 700 to 800 US dollar। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप जितना खर्चा करेंगे उसी लिहाज से आपके फिर सेविंग होगी या आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। लेकिन मतलब एवरेज लाइफ जो एक स्टूडेंट लाइफ है उसके अंदर ये बता रहा हूँ कि मास्टर्स में आप $400 से $500 या $500 से $600 आप बचा सकते हैं, और PhD में आप $800 तक पर मंथ तक
तकरीबन बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। ओके, आई थिंक यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन एंड अब हम करेंगे जी साइन ऑफ आज के लिए। कल मिलेंगे किसी और नए स्कॉलरशिप के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, उन कमेंट्स को मैं आंसर कर दूंगा बाद में। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं रिव्यू के लिए, प्लीज़ वेट कीजिए, मैं आज बिज़ी था, तो कल या परसों तक इंशाल्लाह कल कोशिश करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिव्यू करके फीडबैक दे दिया जाए। So thank you so much and keep watching us. Subscribe to our channel and thank you.